actually a practice. What is DevOps? DevOps is a practice. Okay, it's a practice to be followed. To be followed. सब company different practice they follow करती, right? Mindset. How do you want your applications to be automated? How you want to deliver your applications, right? That's a mindset. Then it's a collaborative work between the teams. Between the teams. It is a collaborative work between the teams. What is the collaborative work? See, if a developer doing the development and simply sending it, the applications once he develops, he sends back to the developers to the testing team. Then testing team, if there is no collaborations between the teams, tester what will they will simply do the testing, and if they find something, they'll send back to the development to your work and again do the development and do. But after that, what will happen? Once it goes to release, they'll find some issues and they'll send back to the tester or the developer to work, right? If there is no collaborations, what will happen here? The communications between the teams will not be there. So here developer will struggle to find the resolutions and fix the problem and again develop it and send back to that, right? If we collaboratively work together within the teams, the development, the testing, and the operations team, those who called as production support team, right? Then what will happen? They can find the problem easily and quickly fix it and deliver it for again the productions, right? And DevOps, we use multiple set of tools. We use set of tools to achieve it. Okay, so this is when we are going to learn what DevOps is and what are the tools we are going to use to achieve it. And in DevOps, we will find there are a few terms or concept, you can say. The terms will be CI, CD. That's called continuous integration, continuous delivery, continuous deployment, continuous delivery, continuous deployment, right? We'll see all these things, right? So what is the continuous integrations? The continuous integrations which will be in the development phase, continuous development phase, from the development phase to continuous build phase, right? Let me explain you here in a diagram here how the DevOps life cycle works with this continuous integrations and delivery deployment. Continuous development, continuous testing, continuous delivery, continuous testing, continuous deployment, continuous monitoring. All these things are continuous. The word itself you are saying, right? Continuous means everything will continuously work. So if we are going to do the continuously work without automations, it's not possible, right? Without automation, the continuous word itself will not be possible. Something will be there. We can automatically do the work. So human, if it is being done by a human, then what has to be done? It will be manually being triggered or manually can be
executed one by one. It's not cannot be continuous, though it can be continuous, but it will consume more time and consume the resources, human resources, right? So in DevOps lifecycle, if we see here how it happens, normally what happens? A developer, right? A developer develops the code, right? Developer develops the code, right? So once he or she writes the code and finishes, what will happen? Here they will push the code to the remote repository. Suppose in our case, we are going to learn GitHub, right? They're going to. So GitHub is nothing but the source code management, right? What is this? Source code management, SCM, source code management. So what this source code management does? It manages the source code, which is written by the developer. What the developer writes? The developers writes the code to build the applications, to build the applications. That code will be pushed to the GitHub, right? So GitHub is a, what is this? It is a remote repository system, right? Remote repository. So what is repository? Subhasri, repository कौन? मतलब what is repository? Repository ଆମେ କାହିଁକି यूज କରିବା? ये सब बेसिक छोट छोट जिनस आमे जानिबा को पड़िबो. Guys, you are totally new, I know. I understand totally you are fresh. तो जेहेतु आमे सीखुचे तमे माने डेवऑप्स सीखुचे तो तमे पूरा कंप्लीट फ्रेश रु जानुछ तो ये सब वर्ड तमे acquainted नथिबो. I understand, but it I'm already पढ़ी सारिछे. You should tell me the answer now, right? I'm already पढ़ी सारिछे एटा. तो नुआ पिलांग पई हुए तो रेपोजिटरी से माने जानि नथिबे रेपोजिटरीटा कोन, राइट? अच्छा तम मनक भितर की मते कहि परिबो रेपोजिटरी कोन काहे की यूज कराउची? हमें स्टोर करिया पे अच्छा कोन स्टोर करिया पे? सोर्स कोड सोर्स कोड, राइट? गुड. तो हमर सोर्स कोड को स्टोर करिया पई तो हमें काहे की स्टोर करबा? सोर्स कोड को हमें सोर्स कोड भी तो गोटे फोल्डर बा गोटे डायरेक्टरी क्रिएट करी कि हमर सिस्टम रे रखि दबा ना. तो रेपोजिटरी कोन दरकार? कि मते बुझे एक्सेस पारिबो कर करिया व्हाई पे वी नीड इट. सॉरी? इट कैन बी एक्सेस टू एवरीवन Okay. One thing is to it can be contributed, distributed to everyone. So everyone can access that one. That's okay. If it is kept in remotely, right? The remote रे रखा होची तो everyone can accept it if they have access to it, use it, right? Fine. ଆଉ କଣ ଅଛି ନା repository system ରେ ଆମେ କୋड जो ଆମେ ରଖୁଛେ, right? ସେ କୋड को ଆମେ କଣ ଆମେ version control ରେ रखी परिबा. माने version control रे तमे किछि भी कोड चेंज करूछ. Every time you change your source code and update into the repository, it will create a new version. Commit into the repository, it will create a new version. Why we need the version control? To track the changes. To track the changes, we need the version control. In case suppose your new version, whatever you have written, there is some issues, right? किछि गोटे issue आसिला आ तमे चाहूचो सेटा को previous version को आनी कि आउथर काम करिबा पई. Then you can easily get your previous versions and do your work. Repository has many benefits, right? So we'll have local repository and remote repository.
right? So what is the local repository? Which tool we can use for local repository? Subhasri, now you can answer me. Who tool टा हमें local repository use करि परिबा? Hello. Subhasri, you there? Also, hello. हाँ, कोउ tool टा हमें use करि Uh, परिबा local repository? code, uh, भूली ही जाइए Okay. सर. Okay, बढ़िया करछ. स्वरूप यूज करिया हमें local repository में कोड tool use करिबा? गिट गिट यूज करिया हाँ. तो हमें use करिबा git. Okay? तो local रे हमें use करिबा git. तो एटा ला local repository. तो developer जेतो develop करूची, right? तो से कौन करिबा ना? तारा local repository रे काम करिवो. तो local repository कोडी हेबो? ता machine ता पई हबो local repo. ता machine ता पई हबो local repo जोडी की से git यूज करिवो. जोडी की से git यूज करिवो, राइट? तो सेटा को कौन करिवो? git यूज करि साला पर जे तो multiple persons will work there. So what will happen? They will send that code to the GitHub remote repository where multiple developers can access the code, right? ए पार्टटा बुझी गलो, किसी डाउट नहीं, राइट? तो constantly pull out push एठिरे चलिथिबो, right? Constantly pull out pull out push चलिथिबो, right? तो ए constant पार्ट हमर कोन हेउची? ए जो पार्ट हमर रहिला कोन हम कहबा continuous development, right? It will be do continuous development. हम कहि परबा continuously development चलछि, right? Good. Now तो हमर तो डेवलपमेंट सरिला, एटा को इरेज कर दोछि. हमर तो डेवलपमेंट सरी गला, राइट? तो डेवलपमेंट सरी गला पर कोन होछि? हमर कोड रही गला कोडी सोर्स कोड मैनेजमेंट रे. तो से कोड ता तो खाली हमें रखी बानी सोर्स कोड मैनेजमेंट रे रिपोजिटरी. हमें ता गोड कोन करिवा? ताको तार गोटे प्रोडक्ट फाइनल एप्लीकेशन प्रोडक्ट बनेबा, राइट? तापे हम कोन करिया दरकार? तापे हमको बिल्ड करिवा उधर से कोड को हमें build करिवा, right? So before building that code we need to do the unit test. So unit test हमरो जो टेस्टिंग कांसेप्ट अछि तमे जदि जानि थिबो तो सॉफ्टवेयर लाइन रे जदि किछि भी टिके नॉलेज थिबो तो टेस्टिंग हमर जे रहउछि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, राइट? ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स. तो व्हाइट बॉक्स माने जोटा कि हमर यूनिट टेस्टिंग आसुछि, जोटा कि डेवलपर can read the code, right? Where the code is visible in unit testing, code is visible. Normally agru kon करथले ने डेवलपर माने ही यूनिट टेस्ट करूथले. डेवलपर माने ही यूनिट टेस्ट करथले. माने से माने किछि गोटे पीस ऑफ कोड लिखिले, से कोड ता काम करूछि ना नाही से माने कोन ना किछि इनपुट देकी तारा आउटपुट बाहर कर चेक करथले whether that piece of code whatever they have written is actually working as per the requirement or not, right? तो से माने यूनिट टेस्ट करंती. तो सेला हे गला पर तापरे से माने कंप्लीट तापरे बिल्ड करंती. तापरे फर्स्ट कोन यूनिट टेस्ट आउ बिल्ड. तो ता पे हमें कोन करिबानी गोटे टूल यूज करिबा जोटा को हमर बजाउछि CI/CD tool, that is Jenkins. Okay, this is a build automation tool. This is CI/CD automation. We can see CI/CD automation tool, right? Automation tool, right? So what happened then? How the code will come here?
So the code can be triggered by GitHub, or Jenkins can also pull the code from the GitHub. तो Jenkins आनिला, Jenkins आनिला एठी कौन करिवो से करिवो यूनिट टेस्ट, राइट, से करिवो कौन सब काम करिवो, देखो कौन काम तमे Jenkins द्वारा करई पारिबो, राइट, यूनिट टेस्ट, राइट, यूनिट टेस्ट, कोड स्कैनिंग, ये स्कैनिंग कौन पाई करा है, किछि एरर किछि वल्नरेबिलिटी पाई हमर कोड स्कैनिंग कराबो, तापर कौन कराबो बिल्ड कराबो, राइट। तो हमर एठी बिल्ड हैला पर कोन हबो, हमें बिल्ड कला पर जेनकिंस रे बिल्ड कले कोन हबो, ये गोटे जनरेट करिवो कोन बाइनरी फाइल जनरेट करिवो आफ्टर बिल्ड। व्हाट इज द बिल्ड प्रोडक्ट, द बिल्ड प्रोडक्ट इज ए बाइनरी फाइल, राइट। सो नॉर्मली इन टेक्निकल टर्म द बाइनरी फाइल, जो बाइनरी फाइल टाको हमें कौन कहूँ आर्टिफैक्ट, राइट। सो गोटे आर्टिफैक्ट जनरेट करी, जेमति कि हमर डॉट वर फाइल हमें हमर पढ़ी ऑलरेडी, डॉट वर फाइल बा डॉट, जदि जावा एप्लिकेशन हमें जदि करूचे डॉट वर बा डॉट जार फाइल, राइट। तो बिल्ड हे गला, तो बिल्ड पर कोन होची, तो ए जो कंप्लीट हमें देखुचे, राइट, कंप्लीट हे गला पर हमें एटा कहि परिबा सीआई, continuous integrations part, continuous integration, right? तो जल्ले continuous integrations असला, तो आमे अब वर्तमान कोन करिबा, आसी गला कोन बिल्ड हे गला। तो ये जो प्रोडक्ट हमर बिल्ड हैला वर, त आमे त कोन करिया गोटे जगह को डिलीवर करिबा, राइट। सपोज आमे डिलीवर करिया को चाहूचे गोटे टेस्टिंग एनवायरनमेंट, राइट, गोटे टेस्टिंग एनवायरनमेंट। तो ताको टेस्टिंग एनवायरनमेंट को जेतला हमें डिलीवर करिबा, राइट, ता पई हमें आइदर थ्रू, सपोज एडी गोटे मोर टेस्टिंग एनवायरनमेंट अछि, गोटे मशीन अछि, गोटे सर्वर अछि, जोटी के हमर टेस्ट सर्वर, एटा एटा हमर टेस्ट सर्वर, एटी की मते एक वार फाइल टाइप एप्लीकेशन को पठेबार अछि, जोटी हमर टेस्टर मान टेस्ट करिवे, या फिर ऑटोमेशन टूल टेस्टिंग करिवो, right? Then how we can send it? Jenkins has that capability, that feature. It can also directly deliver the code to the server, right? It can directly deliver the code to the server, right? Directly deliver it to the server. Or most of the companies, what they do, instead of they directly deliver, what they do, they use another tool that's called your artifactory. That's called your artifactory. Artifactory. So it's a factory with artifactory which stores the artifacts. So what are the artifacts? It's the binary file. It's the binary file which stores into the artifact. It could be your Nexus, it's an application, or you can say it is JFrog, जोटा कि तमर binary repository. This is your binary. This is your binary repository. Means it stores the binary file. So what we can do, Jenkins can deliver this to the binary repository or deliver to the artifactory. It can deliver to the artifactory, right? So what it will be delivered? It will deliver the jar and war file. तो ये jar और war file को deliver करियो, right? Dot jar file और dot war file को से deliver कर देला, right? तो एटे तो deliver हे गला बाइनरी रे परे, बट हमको दरकार अछि टेस्टिंग सर्वर का शेयर। तो ता पे हमें कोन करि परिबा, देखो
माइंडसेट तुम माइंड मुझे पूरा तुम कंप्लीट बुझुची आटू भलो केही बुझेई पारिबेनि मोर एतिकी मु कहबे आटू केही बोलते हुए तो भलो भाबे बुझेई पारिबेनि तो एतिकी तुम यदि बुझी न पारिबो देन डेवऑप्स तुमको टोटल डेवऑप्स तुम जानि ही पारिबोनि राइट तो आटू इजी वे रे केही बतई पारिबेनि मते लागुची तो एठी कोन हला डेलीवर हेगला तो कोन हला गोटे माइंडसेट देखो मु चाहिले जेनकिंस गोटे किसी कंपनी अछन डायरेक्टली जेनकिंस रु सर्वर को टेस्टिंग पई पठै दउचंती तो तांकर गोटे टूल रे मल्टीपल काम हेगला कोन यूनिट टेस्ट स्कैनिंग बिल्ड सब हेगला जो कोड स्कैनिंग होची कोड स्कैनिंग जेनकिंस गोटे प्लगइन बा अनदर टूल यूज करिवो जेटा कि से कोड स्कैनिंग से कर पाए सोनार सोनार स्कैन बा सोनार टाइप यूज करा हुए सोनार क्यू ओके सेटा गोटे टूल जोटा कि जेनकिंस ट्रिगर करिवो से ऑटोमेटिक बाय थ्रू जेनकिंस राइट तो हमर एठी मु आइदर डेलीवर कर पारी बा एठी स्टोर करली तो एठी स्टोर करिवार कारण कोन होची ना easily we can do the version control of the binary files version 1 version 2 version 3 असला तो एठी हमें कोन करिवा चाहू छे जदी डिलीवर करिया पे हमें आ गोटे कोन करिवा यूज करिवा ansible हम ansible यूज कले तो ansible कोन होची ना ansible हमें जानि छे कोन पई यूज होय cm ansible कोन पई यूज होची cm cd also it can be used for as isc what is cm it is configuration management configuration management cd हला हमें कौन जान जाए cd एठी cd हबो continuous deployment और डिलीवरी भी तुम कहि परिबो continuous deployment मु लिखु छिटी continuous deployment तो एठी हमें आउ IAC हला infrastructure as code it can be used but most of the companies they are using as configuration management and continuous deployment okay infrastructure as code इदा ऊपर परे मु बुझेबी तो ansible असला पिक्चर को तो ansible कोन करिबो बाइनरी रेपो रु कोड को पुल कला नॉट कोड बाइनरी एप्लीकेशन बा प्रोडक्ट को पुल कला परे ये कोन करिवो डायरेक्टली डिलीवर कर दो कोडिंग टेस्ट सर्वर को तो एठी हमें कोन हेगला जदी सिंगल डिलीवर ऑलरेडी सर्वर सब अछि तो डिलीवर कला तो एठी हेगला कोन हमर कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट हेगला राइट कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट हेगला तो बेसिकली इट कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट हेगला ना ansible कोन करि परिबो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जदी एटा गोटे नुवा सर्वर हेतिबो राइट जदी नुवा सर्वर हेतिबो देन जेनकिंस रु हमें जदी ताकू पठेइबा तो कोन हबो गोटे एप्लीकेशन रन हबो गोटे जावा एप्लीकेशन हमें बनै छै जावा एप्लीकेशन रन हबा पे हम कोन दरकार बेसिकली जावा फर्स्ट थिंग जावा इंस्टॉल हेतिबा दरकार आ तो से एप्लीकेशन रो सब जो बाइनरीज बा लाइब्रेरीज ता डिपेंडेंसीज right dependencies should be there prior to the deployment right तो आमे सेठी कोन करिया यूज करबा ansible जे की कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करिवो माने तो एठी कोन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करिवो माने से जो एप्लीकेशन ता डिप्लॉय करिया पूर्वरु आमे जानिले एटा गोटे जावा एप्लीकेशन तो से कोन करिवो ना जावा इंस्टॉल करिवो आमे इंस्टॉल करिया जावा पे कोड लिखिवा जावा इंस्टॉल हबो ता पे गोटे फाइल किछि कॉपी करियार अछि किछि अलगा सॉफ्टवेयर किछि इंस्टॉल करिवार अछि अलगा लाइब्रेरीज डाउनलोड करियार अछि बाइनरीज डाउनलोड करियार अछि सो एवरीथिंग वी कैन डू द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट विथ ansible जदि न्यू सर्वर गोटे हला न्यू सर्वर तो इटा सिंगल सर्वर न आउ ansible कोटी बेनिफिशियल हे परिबो जोटी वी आर गोइंग टू deliver to multiple other servers also so what will happen through inventory हमें कौन करिबा ए सब सर्वर इंफॉर्मेशन ansible रे शेयर कर दो ansible कौन करिबो ए पर्टिकुलर सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करिकरी
कोड आनिकरी डेलीवर कर दो नाउ तमे बुझी पाला आंसबल टा कोठी हमें यूज करिबा आ केतबेले यूज करिबा राइट तो एटी बुझियो जदी हमरा ऑलरेडी गोटे सर्वर अछि तो वन टाइम गोटे सर्वर को डेलीवर करे अछि देन we might not need the Ansible to be there. We can directly deliver that after doing some setups. We can directly deliver from the Jenkins if there is only one server. If there is multiple new servers, multiple servers are there, and we need to deliver that. हमको deliver करियर अछि तो सेठी हमें कौन करिब सेठी हमें सॉरी सो सेठी हमें कौन करिब हमें तो सेठी कंप्लीटली हमें यूज कर पारिब कौन आंसबल मल्टीपल सर्वर को सेंड करिया तो बुझी पाइला आंसबल कोड यूज होची राइट क्लियर एनी डाउट किसी डाउट अछि को मते मु बुझे देबी क्लियरली आउ बुझी पाला तो तो एबे पचारिबा तुम डॉकर और कुबरनेटिस कोठी पकेबा आंसबल तो हमें बुझी देले देन वेयर वी कैन कीप द डॉकर एंड कुबरनेटिस इन डेवऑप्स ओके तो जेनकिंस और आंसबल हमें कौन कले ना एप्लीकेशन को बिल्ड कले जेनकिंस रे डिलीवर भी कले आंसबल कौन कले कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कले डिप्लॉयमेंट कले राइट कोनटा हमर एप्लीकेशन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बा वेब एप्लीकेशन किछि भी एप्लीकेशन पैकेज को हमें डिलीवर कले जोटा कि नॉर्मल सर्वर को हमें सेंड करू छी राइट बट तमको किछि एप्लीकेशन को कंटेनराइज करिवार अछि तो कंटेनराइज टेक्निक में बुझी पारिबनी जते पर्यंत माने सुनी था आमे तो कंटेनराइजेशन पढ़िबा से तो तुमको क्लियरली मु बुझे देबी राइट तो कंटेनराइजेशंस माने कोन जोडी में एप्लीकेशन को कंटेनर भितरे safely we can run that independently right without bothering about any system dependencies we can run that application right container run kari right se application को server रे run करी different container रे run करी then what we can do हमें सेठी यूज करि परिबा डॉकर यूज करिबा जोटे कि हमर कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट रे आसीबा तो हम एप्लीकेशन को हमें चाहिबा गोटे कंटेनर भितर रन करियर अछि तो हमें कंटेनराइजेशन ऊपर पढिबा कंटेनर टेक्नोलॉजीज ऊपर जानिबा कोन केमती कंटेनर टेक्नोलॉजीज काम करछि कोन राइट तो सेठी हमें डॉकर यूज करिबा कोन पाई कंटेनराइजेशंस पाई कंटेनराइजेशन पाई यूज करिबा तो एप्लीकेशंस को हमें डॉकर थ्रू डॉकर कंटेनर क्रिएट करी पके तो हमर जदी तो एठेला कोन डॉकर यूज होला तो कुबरनेटिस कोड यूज हो जेते बळे हमर मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट हे जिवो मल्टीपल कंटेनर्स हे गला मोर देन 30 40 100 कंटेनर्स आर देयर तो इस सब कंटेनर्स को हमें सिंगल थ्रू डॉकर एप्लीकेशन डॉकर टूल वी कैन नॉट मैनेज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट राइट सो ये को हमें कोन आको मैनेज करिया पई हमको गोटे ऑर्केस्ट्रेशन दरकार हमको गोटे ऑर्केस्ट्रेशन दरकार टू मैनेज इट राइट टू मैनेज multiple containers to manage multiple containers so what we need kubernetes so kubernetes will be used as an orchestration to manage the containers right so ए पार्ट टा कोन हमर जाउची एटा केतल यूज हो सीडी रे कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट पार्ट त माने कोन होची हमें बिल्ड कले कोडी जेनकिंस रे राइट बिल्ड कले जेनकिंस रे एटी हमें थ्रू एंसिबल देई परिबा या फिर वी कैन डायरेक्टली
can do from Jenkins also. Docker can be triggered from Jenkins. Okay, to Jenkins create, right? The Kubernetes create CD. तो वर्तमान पर्यंत आमे CI CD रे रही गले, right? The continuous deployment. ये जो complete setup टा आमे करिबा, right? Complete setup टा आमे करिबा. तो complete setup भीतर एटा CI CD complete setup we can do in Jenkins. As it is a CI CD automation tool, we can do all kind of integrations inside the Jenkins. This is actually called one of the integration tool. Okay, so we can integrate all these things. No. So ବୁଝିପାରିଲ integrations କରାଉଛି, right? ତ ଆମେ next କଣ କରିବା? Okay. Docker Kubernetes ଜାଣିପାରିଲ, right? ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ tool ଅଛି କଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ? Terraform, right? Terraform बतेबी DevOps रे कोड यूज करावे. तो बेसिकली मैं सब काहे की बतौछि ना गाइस, जेमति कि आखरु कहिछि तमे DevOps कोन जानि पारिबोनी बा DevOps रे डिफरेंट टूल जो यूज होछि, जो टूल हमें पढिबा तार यूज केतबळे तमे करिवो, राइट? तुमको गोटे बंदूक धरई दिया जीव, तुम बंदूक केमती माने कौन पे यूज करा हुए केतबळे यूज करो तुम जानी न पारिबो, then what is the point of having this gun, right? Similarly तुम जो DevOps जानुचो पढुचो टूल सिखुचो, सिखि साला पर एट द एंड रे कहू जानिनी कोठी ताको यूज करबी, then no point that to learn all these things, right? तो बेसिकली कौन से दिन सब जेमति सब बळे कोइ किछि भी सिखिबा आगुरु फर्स्ट जानिबा दरकार एटा कोन आ मु कोठी कोन पई सिखुछि एटा, राइट? It is what it is and why we are learning it. जानि साला पर जदि तमे what और why जानि देल how ऑटोमेटिकली तमे सिखिबो बा प्रैक्टिस करि के इंप्लीमेंट करि पाइबो. जेमति गोटे एग्जांपल दउतली गन रो. What is gun and why you need it, right? Gun जानले हमें, right? We can fire a bullet to kill someone. काहे के हमको दरकार एटा? To protect ourselves. निजु प्रोटेक्ट करिया पे हमको गन दरकार. तो केतल प्रोटेक्ट करिवो? जेतबळे किछि डेंजरस थिंग्स आसिला तम पाकु बा तमे निजे फील कल किछि, then you can fire it. Before fire you should know how to fire it, right? तो what is why and how सिखि गला पर तुमको सब संसार रो सब दिन से तुम जान पाई, राइट? बुझलो? तो ए सब डेवऑप्स हमें सब सिखुचे, राइट? देन आसुचे टेराफॉर्म. टेराफॉर्म कंप्लीटली एक्चुअली ये सब जो डेवऑप्स हमें सीआई सीडी देखले, टेराफॉर्म एक्चुअली ये कौन कुहा जाय ताको आईएसी. जेमति को बर्तमान कहूतली हमर कोन Ansible also called as ISC. It can be, we can achieve the ISC in infrastructure creation. So what is the infrastructure? Infrastructure कौन? तो हमें in computer world, in software world, right? तो हमें जेकोसी काम करछे related to कौन होची? Network, server, right? Network, server, storage, computing, resources, everything that should be there in one of the infrastructure, right? तो हमें कौन सी infrastructure तो हमें तो set off करूचे, either it will be on premises or cloud infrastructure, right? हमें cloud भी पढ़ीचे, फिर भी हमें cloud पढ़ीबा आउरी तो किछि पढ़ीचे आउरी अल्प cloud पढ़ीबा. तुम जन कहइतली कि न्यू बैच जो स्टार्ट होची से न्यू बैच रो हमें हमर cloud जर्नी आउतरे भी स्टार्ट करिबा. तो सेतिबे हमें क्लियरली सब क्लैरिटी तुमको मिली जिवो, right? Again तो infrastructure हमें किछि गोटे infrastructure किछि गोटे सर्वर प्रोक्योर करूचे, किछि गोटे स्टोरेज नउचे,
କିଛି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ କିଛି କ୍ଲଷ୍ଟର କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ ରାଇଟ୍ वी कैन ऑटोमेट दैट आल्सो तो आजिका डेट रे जेमति कि क्लाउड रो बहुत टाइप्स रोची क्लाउड रो बहुत डिमांड्स रोची तो राइट तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आमे दी क्लाउड रे किछि गोटे रिसोर्सेस नौचे किछि सर्वर क्रिएट करछे किछि कंप्यूट पावर नौचे राइट तो either we can do manually if there is only one or two or multiple times जदि कि आमे कोनोसी दिन आमे ऑटोमेट फर्स्ट थिंग आमे ऑटोमेट काहे की करूछे जदि आमे गोटे दिन once or twice we are doing it that's okay we can do it one or two times but that things if we need multiple times what we need that to automate right सी इंफ्रास्ट्रक्चर जदि आमे थरे क्रिएट कर देले देन हमको आउ नेक्स्ट 1 ईयर पर्यंत दरकार नाही then it's fine without ISC without any tool we can manually do that but if we are going again and again we are creating the servers we are creating the storage we can adding something that time we need that to be automated right to save the time to quicker to save the time to quickly deliver it to quickly without any error all these things we can do that by using the ISC tool so for this we can go with Terraform okay we can use Terraform double R Terraform ଆଉ ଥରେ ଲେଖି ଦଉଛି ଭଲ ଭାବେ it's called Terraform F-O-R-M Terraform this is one of the ISC tool to automate the infrastructure right ISC full form તમે જાણો infrastructure as a code infrastructure as a code okay तो आमे Terraform यूज करिवा तो Terraform एठी आमे कोड यूज करिवा DevOps रे तो DevOps रे एथि पे आमे जानुचे तो आमे कोनसी सेटअप करिवा पूर्वरु ए सब पर्टिकुलर सेटअप करिवा पूर्वरु इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करिवा पूर्वरु हमकु किछि सॉरी DevOps यूज करिया पूर्वरु हमकु किछि इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार तो मते जो इट मु जो Ansible रे बतेइली थी राइट Ansible रे मल्टीपल सर्वर को हमें सपोज deliver करछे राइट हम सपोज मल्टीपल व्हाट हैपेंड ओके सपोज मल्टीपल सर्वर को हमें डिलीवर करछे तो एठी कोन होबो we can use our Terraform to create multiple servers right so what we can do we can create multiple servers suppose एठी हमको दरकार 10 टा सर्वर suppose you got a new project तम कंपनी गोटे नुवा प्रोजेक्ट आसला आ तुमको 10 टा सर्वर क्रिएट करियर अछि तो 10 टा सर्वर तुम यदि मैनुअली खाली 10 टा सर्वर माने 10 टा मशीन तो क्रिएट कर दबनी ना से मशीन पई कोन सब दरकार कोन नेटवर्क दरकार कोन स्टोरेज दरकार कोन माने सर्वर टाइप दरकार इंस्टेंस टाइप दरकार कोन सब ईबीएस वॉल्यूम दरकार कोन सब सिक्योरिटी ग्रुप दरकार केमती इंटरनेट एक्सेस दरकार राइट केमती नेटवर्क सेटअप करियो तो सेटा कोन करियो तम तो मैनुअली कला माने ऑब्वियसली टाइम लागिवो राइट आ मल्टीपल टाइम्स तमे जदी यूज कर बट बट कंपनी एमएनसी कंपनी कोन होची ना मल्टी टायर कंपनी से माने सर्वर्स based on their multiple clients हिसाब रे मल्टीपल सर्वर प्रोक्योर करंती राइट तो सेठी हमें कोन करबा यूज करबा Terraform हमें यूज करबा Terraform
राइट एटी हम यूज करबे टेराफॉर्म तो टेराफॉर्म हम तो यूज करछे सेटी कोन होची टू procure but to do the infrastructure automations automatically we can procure we can create these servers not only servers we can do everything whatever the infrastructure is in terraform right तो terraform कोड यूज करियो तमे जानि गलो right तो ए जो केस रे वर्तमान मु चाहू छी एटी मु terraform यूज करबी तो केमति यूज करबी terraform तो ansible before the deployment before the deployment suppose before the deployment ansible we want this server to be created so what we can do we can use terraform right we do a choto use kar doji you can use terraform here and this terraform script but tool can be triggered by Jenkins it also can be triggered by Jenkins so Jenkins trigger कर दला terraform कौन कला server create कर दला right server create कर साला पर then Jenkins also can trigger the Ansible playbooks Jenkins can also trigger the Ansible playbook then Ansible playbook कौन करिवो ये server create हे गला पर Ansible playbook कौन करिवो so cool right all the tools आमे कौन कल सब integrate कर दिला आधरे तो ये सब फंडामेंटल्स तुमको जानिबा को पड़ी ये सब डिटेल्स तुम यदि जानि न परिबो देन तमे यूज करि परिबनी राइट सेति पय कहली डेवऑप्स टा गोटे टेक्नोलॉजी नो जे तमे सिखि देला पढि देला माने हेइ गला एठी हमें कोन देखली जानले वर्तमान एटा तमे गोटे ऑटोमेशंस बा टूल सेट केमति यूज करिवो तम लॉजिक तमे आइडियाज पके तम रिक्वायरमेंट हिसाब तमे केमति सेटअप करिवो अब ये प्रोसेस जे बुझि न परिबो देन तो किसी भी करि परिबन राइट टेराफॉर्म माने सॉरी डेवऑप्स जानि परिबन hope everyone understood what I taught today right तो जदि भी किछि भी डाउट रोची गाइस तो तम माने मते कहि परिबो तो मु आउथरे तुमको बुझे देबी बेसिकली मु चाहबी जो वीडियो टा मु रिकॉर्डिंग आज भी अपलोड कर देबी रिकॉर्डिंग टा तमे कंप्लीट रिकॉर्डिंग आउथरे तरे दुई थर देखो जानो मु खाली कोन जे तमे खाली पढी दियो एटा एक्चुअली तुमको तमे जेतु इंटरव्यू पे प्रिपेयर करिवो इंटरव्यू प्रिपरेशंस करिवो देन यू शुड लर्न ऑल दिस थिंग्स तमे ये सब प्रिपेयर तुमको करिबा को पड़िवो राइट तमे प्रिपरेशंस ठीक से न करिवो जानि भी न पारिवो तुमको क्वेश्चंस आसीबो देन तमे कहि पारु नथिबो राइट तो सेटा बहुत ऑकवर्ड फीलिंग आसीबो राइट तो सेति मु चाहूची तमे फर्स्ट ए सब देखो एटा थर्ड टाइम बोधे मु बुझुची बट दिस टाइम बहुत एफर्ट देइग्री बहुत क्लैरिटी वे रे तुमको बुझे देली वे तो समस्त क्लियर और क्लैरिटी पाई साथिबा विषय रे किछि भी डाउट अछि देन हमें नेक्स्ट बुझिबा तो मु नेक्स्ट क्लास को मु चाहूची जो फर्स्ट नेक्स्ट बैच स्टार्ट होची तब तमे माने पुन थर भी जॉइन करो ओके तो मु तुमको जॉइन देबी केते बेले कोन जॉइन करिवो दैट्स ऑल गाइस आज पई एति की तो किछि डाउट अछि दी डिस्कशन करिवा तो शुभश्री स्वरूप